Assalamu alaikum and welcome back to Campus Chronicles. I am your host Khadija Javed. Today we are having the pleasure of speaking with Dr. Hassan Syed, who is Associate Professor at Sukkur University with a postdoc from University of Pennsylvania, USA, PhD from University of York, and Masters in ELT from Sussex. Dr. Hassan brings both global and local perspectives on English learning in Pakistan. Dr. Hassan, welcome. Thank you very much, Khadija. Thanks for your precious time with us. Pleasure. What first got you interested in English language and education? Was there a moment or a teacher that inspired you? Thank you very much for the question. This is very interesting. Actually, I always wanted to become a teacher because my father was a professor, a teacher, and because I had grown up in an environment where most of the people around me were teachers, especially when I did my intermediate and went on to live with my father in Jamshoro, where he was a professor. So I met a lot of teachers who would discuss a lot of intellectual ideas and then talk about books and then take me for walks. So living with them for about 6-8 months changed my perspective on life, and I wanted to become a teacher. But at the same time, I had done my pre-engineering in my college education. So and my parents wanted me to become an engineer. So I did not have the dare to say no to my father. So I had to go with the option of engineering. But as soon as I was done with my engineering, I thought that this is one life that I've got. Absolutely. And I want to live it on my own rules, right? Live the life as I want to live it. So I decided to do a private education in English literature from university, and after that I started applying for lectureship positions. I got one. Luckily, I got a scholarship with the position of a lectureship. I left for masters and PhD, as you have just said this in my introduction. Yes, sir. And that's my story. Yeah, that's how I got into teaching, English language teaching. And English, why English? Because I was always interested in English literature, Urdu literature, Sindhi literature, and world literature. So literature was something that I was always interested in. So that's how I ultimately ended up as becoming a teacher in literature and off language. Oh, that's an interesting story indeed. Right. Thank you. You have studied in both Pakistan and UK. Any major challenges you faced along the way? No, I think, and probably I would say I was unfortunate that I did not experience any challenges during my master's or my PhD whatsoever. Because as I see it, from the hindsight, from the benefit of the hindsight, I can say that it was a smooth sailing. It was a smooth journey for me. I wish I had experienced more challenges than I did when I was a student of masters or PhD in the UK. But I cannot recall any significant challenges that I experienced as a PhD candidate or as a master's candidate. So not really. Yeah, I learned a great deal as master's or as PhD student. I got to learn a lot. I expanded my intellectual boundaries. Yeah, but no challenges whatsoever I can recall. Yeah. Indeed, challenges are from which you grow and learn the most from. Yeah, challenges teach you a lot. Your research focus on the role of your mother tongue in learning the second language. So do you have anything to say about it? Yes, mother tongue. The role of mother tongue has always been one of my preoccupations as a scholar, and I've always been thinking about this issue. So, in my view, mother tongue is the fundamental human linguistic language right, fundamental human rights. So, language rights are the fundamental human rights. They are associated with human rights. All children should have the opportunity, and not just the opportunity, but the right to have their primary education, their early education, and like if there are possibilities, their even higher education in their mother tongue, right? So that's why the role of mother tongue is important, because it enhances your cognitive abilities or faculties. It allows you to use your critical thinking skills. And as the research tells us that
you cannot think beyond the language that you know. So children who have already acquired their mother tongue have received or have developed a certain worldview on things, right? So if we change the language of their instruction in school from Sindhi or Saraiki or Pashto or Punjabi to Urdu, it changes their worldview altogether, or English for that matter. Now English is becoming the dominant language in the primary education, since the government is like hell-bent on making English as the medium of instruction right from the first grade. So I am a supporter and advocate of mother tongue education, as especially in or at least during the primary education of children. I think that children should be taught in their mother tongue, in their primary language, and it has a great deal to offer in terms of possibilities and possibilities of learning. Like मज़े की बात यह है कि रिसर्च हमें ये बताती है कि मतलब इवन ग्लोबल रिसर्च वो ये बताती है कि अगर हम बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में पढ़ाते हैं तो देर आर चांसेस कि वो सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में ट्रांजिशन करेंगे, राइट? बट अगर हम उनको शुरू में ही किसी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, एजुकेशन किसी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज में देते हैं, तो देर आर लिटिल चांसेस दे विल ट्रांजिशन इनटू द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, एंड दैट्स प्रूवन. ये भी रिसर्च बताती है कि मदर टंग में पढ़ाना is like very cost effective in the long term, although in the short term teaching students in the official or the global language is cost effective or appears to be cost effective, but in the long term research suggests that it is like the mother tongue education is more beneficial for the students than a single monolingual English only education. So you think that we are still stuck in the mindset that English equals intelligence. Yes. Yeah, English does not equal intelligence. Yeah. No, we are stuck in the mindset that we. Yes. Do you want to say on that? You have already said, Chris, yeah, so, and for majority of the times, speaking in your mother language is looked down upon. Yes. So, according to United Nations, a language that is not taught is a language that will eventually vanish away, right? So just अगर हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी मतलब कम्युनिटी की मदर टंग को, किसी भी कम्युनिटी को उनकी मदर टंग में नहीं पढ़ाते, तो इवेंचुअली वो लैंग्वेज जो है मर जाएगी, वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी. सो अगर लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है तो उससे क्या नुकसान होता है? अगर कोई लैंग्वेज ख़त्म होती है तो किसी कम्युनिटी का जो दुनिया को देखने का, परखने का, समझने का जो लेंस होता है, जो व्यू होता है, वो ख़त्म हो जाता है. And then you experience an identity crisis, that who am I, where am I coming from? तो आप फिर मतलब मोहताज होते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है कोई और ज़ुबान के थ्रू या किसी और मतलब उसके थ्रू फिल करें आप उस आइडेंटिटी के गैप को, वॉइड को. And that is one of the reasons why most of the youth taught in languages other than their mother tongue, they experience this identity crisis because they are taught in English, they are taught in languages that are not their mother tongue, so they are not connected with their parents or grandparents, or they do not get the received wisdom from their community or receive wisdom of their community. We have forgotten to actually read Sindhi, like the Rasmul Khat. लिखने में भी मतलब लिखने में भी and the original text कि हम fluently read कर पाएं. I want your views on that. बिल्कुल, मैं आपसे agree करता हूँ कि ये मतलब हमारी जो मौजूदा नस्लें हैं और स्पेशली जो पोस्ट लिबरल नस्लें हैं, जो 2000 के बाद की नस्ल है, उसको और एक मतलब डिस्कनेक्टिविटी है उनकी अपनी मादरी ज़ुबान के साथ और ख़ास करके सिंधी के साथ, बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, एंड बिकॉज ऑफ द न्यू इम्पीरियलिज्म ऑफ इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब. अंग्रेज़ी ने मतलब नए अंदाज से अपने आप को मतलब मीडिया के थ्रू प्रोलिफरेट किया है और डोमिनेट कर रही है, दूसरी लैंग्वेजेस को सब्जुगेट कर रही है. तो ये जो सिंधी के साथ साथ और भी जो ज़ुबानें हैं, इंडिजिनस ज़ुबानें हैं, मकामी ज़ुबानें हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की ज़ुबानें,
उनको भी नुकसान हो रहा है और उनको भी अंग्रेज़ी उनका स्पेस भी कॉलोनाइज कर रही है। तो इसकी वजह ये हो रही है कि मतलब अब जो लिखने वाला है वो अगर सोशल मीडिया पे अंग्रेज़ी में लिखेगा, स्कूल में जाके अंग्रेज़ी में पढ़ेगा, उसको टीचर्स ये बताएंगे कि अंग्रेज़ी में बात करनी है। जो उसके मतलब घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसके वालदैन हैं, वो उससे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, सॉरी एंड थैंक यू में इंगेज करेंगे, वाटर पानी को वाटर कहना बताएंगे। तो हाँ, तो इवेंचुअली होगा ये कि उसके लिए सिंधी की अहमियत और सिंधी की जो अफादियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और वो सिंधी से उसका जो नाता है, कनेक्शन है, वो टूट जाएगा। तो हमें मतलब ये आपकी बात सही है कि हम सिंधी को एजुकेशन की ज़ुबान नहीं समझते, या हम सिंधी में बात करने को मतलब बहुत अनसिविल समझते हैं, अंग्रेज़ी में कहूँ तो। और उसमें जब हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़े शर्मसार भी हो रहे होते हैं। सिंधी हो या सराइकी हो या और भी बहुत सी जो मतलब ज़ुबानें हैं, अपनी मादरी तमाम मादरी ज़ुबानों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंधी की नहीं। पाकिस्तान में जितनी भी 77 से ज़्यादा नेम्ड लैंग्वेजेस हैं, जिनको नाम दिए गए हैं, और भी ज़ुबानें हो सकती हैं जिनके अभी नाम नहीं तय किए गए, तो उन ज़ुबानों को मतलब लोग मतलब कम समझते हैं और अपनी मादरी ज़ुबानों में बात करने को में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है जहाँ अंग्रेज़ी को सुपीरियर लैंग्वेज कर दिया गया है या हो गई है, और हमारी लैंग्वेज भी उसी को मतलब रीइंफोर्स कर रही है पॉलिसीज़ के थ्रू। English still carries the colonial prestige in our society. Do you still think that we are stuck in the mentality that English equals intelligence or class? First of all, yes. English, because of its imperial baggage or imperial history, colonial history, it was introduced to us by our colonial masters, and their purpose was to create a class of interpreters, Indian in color and blood, but English in opinion, beliefs, tastes, and everything, right? So, like this legacy of English colonialism, or at least this association of English with colonial mindset or colonial mind, has stayed on after the independence of the country. So अभी तक भी मतलब हम वो अंग्रेज़ी को उसी माइंडसेट से देखते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो इंटेलिजेंस की ज़ुबान है, अंग्रेज़ी महज़ब ज़ुबान है, अंग्रेज़ी एक मतलब क्लास की ज़ुबान है। जब आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो यू आर बेसिकली साउंडिंग एलीट। और फिर न्यू लिबरलिज्म के बाद दुनिया में जब न्यू लिबरलिज्म और सरमायादारी का जब मतलब रिसर्जेंस हुई है 1980s के बाद, तो उसमें अंग्रेज़ी और मतलब अपने अंग्रेज़ी ने अपनी ग्लोबल पोजीशन को और मजबूत कर लिया है। तो अब ये होता है कि हम जिस तरह अंग्रेज़ी को यहाँ सीखते हैं या पढ़ाते हैं, उसको हम सिर्फ ये नहीं है कि हम अंग्रेज़ी को बहैसियत ज़ुबान के मतलब एज अ कॉलोनियल लैंग्वेज अभी तक कैरी कर रहे हैं, हम वो तरीके भी कैरी कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेज़ी पढ़ाने के तरीके, अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में बात करने के तरीके, पढ़ाने के तरीके और अंग्रेज़ी को समझने के तरीके भी अभी तक कॉलोनियल पैटर्न्स पे हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी तक भी हम ये इंतज़ार करते हैं, ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी हमें उस तरह से सीखनी है जिस तरह बरतानिया या अमेरिका में बोली जाती है। हम ये अभी तक नहीं समझते कि अंग्रेज़ी अब सिर्फ एक अंग्रेज़ी नहीं है, देयर आर मैनी इंग्लिशेस, राइट? देयर इज़ नॉट जस्ट वन इंग्लिश इन द वर्ल्ड or two Englishes in the world which are legitimate, for example British English and American English, but there are other Englishes as well. For example, Indian English is a variety, Malaysian English is a variety, Singaporean English is a variety, African English is a variety, and legitimate varieties. Nigerian English, I'm not too sure, but like Nigerian English is a variety. And then there are our scholars, Dr. Tariq Rahman and others, Dr. Ahmad Mehboob, they have an argument that Pakistani English is also a legitimate variety of English. So there are multiple Englishes, but we are still stuck with the native speaker mentality कि हमें मतलब वो जो गोरा बात कर रहा है उसके तरीके से बात करनी सीखनी है, और जब तक वो नहीं आती तो हम तब तक अपनी अंग्रेज़ी को कहते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, वो मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, मेरा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, मेरी ग्रामर सही नहीं है। तो हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक सो कॉल्ड नेटिव स्पीकर से कंपेयर कर रहे होते हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझा रहे होते हैं कि जाओ ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करो, जाओ अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करो, जाओ नेटफ्लिक्स देखो वहाँ से अंग्रेज़ी सीखो, BBC देखो वहाँ से अंग्रेज़ी सीखो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल डॉन पे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं
जहाँ कभी नदीम फारूक पराचा बैठे होते हैं, कभी मतलब जर्रार खोड़ो और शाजिब जिलानी अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, उनकी अंग्रेजी भी सुने। हमारे मतलब नेबरिंग कंट्रीज में फॉर एग्जांपल इंडिया में जो फिल्म स्टार्स अंग्रेजी में बात करते हैं, या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं, तो वो अपने तरीके से अंग्रेजी में बात करते हैं। वो किसी नेटिव स्पीकर को ज़रूरी नहीं कि फॉलो कर रहे हों, वो किसी मतलब अमेरिकन या ब्रिटिश मॉडल को ज़रूरी नहीं कि फॉलो कर रहे हों, वो अपने इंडियन स्टाइल में फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें भी यहाँ अंग्रेजी में ये जो नेटिव स्पीकरिज्म है उसको मतलब रिविजिट करने की ज़रूरत है, कि इसको निकालें और हम ये समझें कि हम जिस तरह अंग्रेज़ी में हमारे खत्ते में जिस तरह बात होती है, वो अगर हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा हमारी बात समझ रहा है और वो भी अंग्रेजी में जिस तरह जवाब दे रहा है, तो हम इफ़ वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन दैट इज़ म्यूचुअली इंटेलिजिबल टू द डिस्कसेंट और द पीपल हु आर टॉकिंग हैविंग कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, तो फिर सही है, मतलब दिस शुड बी लेजिटिमाइज्ड कि है। और हम ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी में मदर टंग के अल्फाज नहीं आने चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं आने चाहिए। समटाइम्स इट्स गुड टू इंक्लूड योर डिफरेंट मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज। सिंधी, उर्दू, सराइकी के अल्फाज अगर अंग्रेजी में बात करते हुए आ जाते हैं, तो वी शुड नॉट पनिश आवर स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग देयर मदर टंग इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। सर काफ़ी इंग्लिश के अल्फाज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड हो चुके हैं, जो कि अभी निकाले भी चाहिए। फॉर एग्जांपल द ग्लास, ग्लास को हमारा वी डोंट नो व्हाट टू से दिस इन Urdu or the glass is a glass, like we can't call it a pyala. Sometimes there are words which are not translatable, right? जिनकी meaning transferable नहीं है. You can't translate the word neighborhood into मोहल्ला और मोहल्ला into neighborhood, because neighborhood तो डिफेंस में भी होता है, जहाँ आप सालन एक्सचेंज नहीं कर रहे होते, सही, जहाँ आप रोज शाम को एक दूसरे के घर नहीं चले जाते, सही। लेकिन मतलब यहाँ होता है, अगर फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन नवाब शाह, आई एम लिविंग इन खैरपुर, एंड देन वी आर लाइक we are neighbors, so definitely we exchange niceties on a daily basis. We we participate in like events of sorrow and events of happiness. शादियों में डेथ जो कोई बात हो जाती हैं, तो वहाँ हम we also happen to meet each other at mosques or like other places. तो ये होता रहता है, हमारे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने जाते रहते हैं। तो मोहल्ले का एक और ईथॉस होता है जो शायद नेबरहुड का नहीं होता। आपको डिफेंस में ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा। तो देयर आर टर्म्स, देयर आर वर्ड्स विच आर नॉट सिंपली ट्रांसलेटेबल और ट्रांसफरेबल इनटू अनदर लैंग्वेज। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ अपनी मदर टंग को भी रिकंसाइल किया जाए, और उसको भी मतलब लैंग्वेजेस को सॉलिट्यूड्स में न देखा जाए कि ये लैंग्वेज अलग है, इसको सिर्फ इसी लैंग्वेज के थ्रू सीखा जा सकता है, इसमें कोई और लफ्ज आएगा तो ये मतलब क्राइम हो जाएगा। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर आई बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी डाइवर्सिफाइड, और उसमें और भी चीज़ें मतलब और मदर टंग या मतलब और लोकल लैंग्वेजेस के वर्ड्स और एक्सप्रेशंस आने चाहिए। You also look into L2 literacy in higher education. What is one thing that you think universities in Pakistan often get wrong when teaching academic English? Academic English, I just mentioned, like one of the blunders, not just wrong, but one of the blunders is to teach your students English on the pattern of a so-called native speaker. There is no native speaker. All the speakers of any language are legitimate speakers. They just speak language, or they make meaning, they communicate their ideas, they express their ideas using all the resources they have with them, right? So for example, अगर आप मतलब मेरी वालदा जब ये कहती हैं कि मुझे ग्लास में पानी दो, she doesn't know and she doesn't care and she shouldn't care कि ग्लास किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है, राइट? अगर वो कहती हैं कि फॉर एग्जांपल ओवन में खाना गर्म कर लो, ओवन किस लैंग्वेज का वर्ड है, माय मदर डजंट केयर एंड शी शुड नॉट, राइट? इसी तरह व्हेन वी आर, because she is trying to express her thought, she does not care where she is drawing upon the words, because these are the words everybody understands. So long as we understand, like we are using words in English that are mutually intelligible to our audience, it legitimizes the way we use English. So English को ये देख के पढ़ाना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड क्या है। अगर वो मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि अंग्रेजी में बात करते हुए आप अपनी मदर टंग के अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, और अच्छी बात है। उनको अलाउ करना चाहिए कि इंग्लिश में उनका फोकस फ्लुएंसी पे रहे, एक्यूरेसी पे इतना ज़्यादा ना हो, और एक्यूरेसी में भी हो तो एक्यूरेसी को डिफाइन करने वाला नेटिव स्पीकर ना हो,
हम यहाँ मतलब देखें कि accuracy का मतलब यह है कि how we communicate with each other. Are we fully expressing ourselves? Or not. Yeah, Yeah, we fully expressing ourselves, and then the audience is understanding us or not, right? अगर audience understand नहीं कर रही है तो there's no point of communication, there's no point using any language whatsoever. Exactly. Let's light it up a bit. Was there a British phrase or expression that completely confused you when you first heard it in UK? Like, it didn't confuse me when I was there, but like it certainly confuses a lot of my audience here. So for example, when someone says, hello, how are you? And I respond to this question by using this expression, not too bad. So this confuses my audience. So, kyun sir, kya hua? Not too bad is just an expression saying that I'm all right. It's just another word for saying I'm all right. Right? In the UK, I got to hear this expression a lot. How are you? Not too bad. So not too bad. Like, I keep using this expression here because it is on the tip of my tongue since I was in the UK. So, or it has been there. तो यहाँ भी जब मैं use करता हूँ तो it confuses my audience. Like, has he been ill or has he been sick lately or what? Why is he saying that he's not too bad? So not too bad is another word for I'm all right. I'm all right. I'm all right. Yeah. There's nothing bad happening. So Yeah, it's there's all nothing good. bad. Yeah, it's all good. Yeah. Quick choice: British English or American English? None. None. My own English. That's how I just said. Like, I'm not into Local. Yeah. Pakistani. Like Pakistani or like IBA. IBA. The way we use English in IBA to communicate with our students, to our faculty, and like so yeah. So the English that we use in this community, the IBA community here, is all right. How do you see the future of English education in Pakistan? Are students becoming more confident, or is it the teaching approach evolved in a good way? I think like the teaching should be decolonized. Like, English language teaching should be decolonized, and one of the ways we can decolonize English language teaching in our part of the world, and especially wherever we can as teachers, is to dismantle the native speakerism, dismantle the ideologies of native speakerism, where we are constantly comparing ourselves to a mythical, idealized, white listening, speaking subject, which means like what is it, like a British or American so-called speaker, जो हम समझते हैं कि ये native speaker है, और जब तक मेरा expression, मेरी अंग्रेजी, मेरी grammar, मेरी pronunciation इसके तरह से नहीं हो जाती, मतलब मैं हाँ, तो ये जो sense of inferiority है ना, मतलब this inferiority complex should be done away with. और वो इस तरह हो सकता है कि हम students को बताएं कि there is plurality of Englishes, बहुत सारी अंग्रेजियाँ हैं, or like the way you use English and the way you adopt English and use English to communicate your ideas is as legitimate as a person who does it in England or America or anywhere in the world, right? So this is like what how we should teach English in our part of the world, and this is what I as a scholar have been aiming to, or like this is my scholarship, this is all my scholarship is about. I'm interested in like making this intervention about how we should revisit our English language teaching practices or English literacy in Pakistan and in Sindh. Thank you, sir, for your time. I had fun speaking with you, and I believe so do our viewers. Yeah, thank you very much, SIBA Chronicles, and I'm very, very grateful for the opportunity to have invited me over and like present my ideas. Thank you very much. Yeah.